Hello everyone, welcome to numerical series part 1 of uniform circular motion. So in this lecture we will discuss the numerical only. Okay. So come to our first question. A particle of mass m describes a circle of radius r. Yes. So as per the question, you can draw the diagram. Particle of mass m describes a circle of radius r. Here it is your particle of mass m, suppose. Yes. So question is asking the centripetal acceleration of the particle is 4 by r square. So AC is equals to 4 by r square. The momentum of particle, we have to find the momentum of particle. Okay. So what we have to do in this case? Centripetal acceleration is 4 by r square. Yes, that means we know centripetal acceleration formula, that is v square by r is equal to 4 by r square. So from this we can write, after cancellation of r, v square into r, or you may write v square is equal to, that is your 4 by r. So v is equal to how much? V is equal to 4 by r root over, that is 2 by root over of r. This is your velocity. So momentum का वैल्यू कितना होगा? Momentum p is equals to mass into velocity, that means m into 2 by root r. So 2m by root over of r. So as per the question, our option number 2 is our correct answer. 2m by r, 2m by root over of r. This is our correct answer. Next come to second question. A particle is moving around a circular path with uniform angular speed omega. This is the circular path. Particle is moving with uniform angular velocity omega. The radius of the circle is, the radius of this circular path is r. The acceleration of the particle is, it is asking. So we know the acceleration when a particle is revolving in circular path, that means a centripetal acceleration is v square by r, and we know v is equal to r omega. So that means r omega whole square divided by r. So here we can write it as, r square omega square divided by r. That means the answer is r omega square. Yes, but r omega square option is absent in our question. So in another way we can solve this. What is that? Again see, centripetal acceleration is, you know, v square by r. Yes, and we know the formula v is equal to r omega. v is equal to r omega होने से r का वैल्यू क्या होगा? r is equals to, r will be equal to your v by omega. Yes, so we can put this. So v square by v by omega. So after cancellation we will get v into omega. Yes, so another answer is v omega. So our option number 3 is our correct answer. Next come to question number 3. What is it is asking? Now see the question. Question number 3 is asking, a car moves on a circular road describing equal angles about the center in equal intervals of time. Okay, it is moving in a circular road. It describes equal angle in equal intervals of time. That means suppose a to b, वो ए से लेकर बी तक मूव करने से के लिए टाइम इंटरवल इज टी एंड द एंगल सबटेंड इज थीटा. ऑल्सो बी से लेकर सी देखो मूव करने के लिए टाइम इंटरवल सपोज टी, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? दैट इज ऑल्सो थीटा एज पर दिस क्वेश्चन. सी से लेकर डी तक देखो, सी टू और डी तक चला गया, टाइम इंटरवल इज सपोज टी, एंगल सबटेंड विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, इट इज ऑल्सो थीटा. ऐसे मूव कर रहे हो. सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ कार इज ट्रू? अच्छा, velocity is constant, then it is asking magnitude of velocity is constant but the direction of velocity change. It is very simple question, because velocity is constant, this is wrong. Why it is wrong? Because direction changes continuously as it is moving in a circular path, but magnitude of velocity is constant. Yes, magnitude of velocity is constant. Yes, and but the direction of velocity changes continuously, that is true. Both magnitude and direction of velocity change, that is wrong, and velocity is directed towards the center of the circle. No, centripetal acceleration is directed towards the center of circle.
magnitude of velocity is constant. Why? V is equal to r omega. See, V is equals to r omega, and omega is equals to theta by t. Yes, we know theta is constant, t is constant. Okay, t सेकंड में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? थीटा. एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो होल थिंग क्या दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स v मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट. दैट मीन्स आंसर इज आवर ऑप्शन नंबर 2. Option number 2 is your correct answer. Magnitude of velocity is constant, but the direction of velocity changes. Okay. Come to your question number 4. An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter. ये सर्कुलर ग्रुप का तो रेडियस कितना दे रखा है? दैट इज 12 सेंटीमीटर. एंड it moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the linear speed of the motion? Yes. So linear speed का फॉर्मूला क्या है? Linear speed is equals to r omega. V is equals to, V is equals to r omega. Yes. So omega का वैल्यू कितना? Omega means angular velocity. R into d theta by dt. Yes. Omega equal to d theta by dt. So इधर क्या हम लोग सॉल्व करेंगे? देखो, सो आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन देखो, ऑप्शंस आर अवेलेबल इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, दैट मीन्स ऐसे लिखो 12 सेंटीमीटर बस. एंड एज पर द गिवन क्वेश्चन इट कंप्लीट्स 7 रिवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड्स. 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो एंगल कितना सबटेंड करेगा? बोलो. 1 रिवोल्यूशन में 1 रिवोल्यूशन दैट इज 2 पाई रेडियन एंगल. 7 रिवोल्यूशंस that is 7 into 2 pi radians. Yes, so d theta will be 7 into 2 pi radian divided by हमारा dt टाइम इंटरवल कितना? 100 seconds. So no need to write the unit now. Yes, no need to write the unit. The final answer will be in सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा हमको? दिस विल बी कट करो, देखो 2, ये हो गया 50, देन ये 2 6, ये 25. सो दिस विल बी 42 पाई डिवाइडेड बाई 25. 42 पाई डिवाइडेड बाई 25. सो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग. सो कैसे करेंगे? देखो 42 बाई 25, पाई का वैल्यू पुट करो 22 बाई 7, देन 6, देन इट विल बी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा. देखो 6, इसको कट करो 4. सो आंसर नियरली इक्वल टू हमारा मिलेगा हमको 22 बाई 4. दैट मीन्स नियरली इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग. यस आ रहा है. सो आंसर देखो, ऑप्शन देखो दिखाई दे रहा है अभी 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इफ यू वांट टू सॉल्व इट इन एग्जैक्ट मैनर देन यू कैन प्रोसीड. ओके, द फाइनल आंसर विल बी 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. बाय द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन you can solve this question. Yes, next we will solve the question number 5. A particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolutions per second. The acceleration of the particle in meter per second square. Yes, acceleration पूछ रहा है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. सो रेडियस क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 25 बाई 100, दैट इज 1/4 मीटर. कन्वर्सन आना चाहिए तुम लोगों को. आर इज इक्वल टू 1/4 मीटर. नेक्स्ट 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. इसका मीनिंग क्या है? 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. हम लोग इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे ओमेगा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. कैसे? देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड. दैट मीन्स 2 रिवोल्यूशन मीन्स 2 इंटू एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई सेकेंड. तो कितना आ रहा है हमारा? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. यस, सो नाउ आर मिल गया, ओमेगा मिल गया. सो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी v² बाई आर
or we can write it as r omega square. R का value 1/4, omega square means 4 pi का whole square. So 16 pi square divided by 4. The final answer will be 4 pi r square. Bas 4 pi r square, that is in meter per second square. So this is our final answer. Option number 3 is our correct answer as per the given data available in question number 5. Next, come to question number 6. Yes, a particle moves in a circle describing equal angle in equal times. ये तो बहुत अच्छा गिवन डाटा हो गया हमारे लिए. इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स ओमेगा, वी नो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट. बस ओमेगा इज कांस्टेंट. सो इट्स वेलोसिटी वेक्टर क्या गिवन डाटा है देखो, it describing equal angles in equal times, its velocity vector will be remains constant. Change in magnitude, change in direction, changes in magnitude and direction. Yes, so velocity vector b का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? So correct answer is change in direction. A particle moves in a circle describing equal angles in equal times. That means वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल टू आर ओमेगा. तो रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट तुम्हारा. सो v इज इक्वल टू जो आर ओमेगा वो क्या है? लीनियर वेलोसिटी. यस, सो आंसर होगा हमारा चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंजेस इन्फिनाइट टाइम्स, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट we'll solve question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से ऑब्जर्व करो. देखो एक अच्छा क्वेश्चन है. ए मास ऑफ 2 kg इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रोटेशन पर मिनट. ओके, इनिशियल स्पीड 5 रोटेशन पर मिनट. कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड. अच्छा, ये वही सर्कुलर पाथ ऐसे घूम रहा है. देखो मास 2 kg दे रखा है हमको, ये मास 2 kg एंड उसका रेडियस क्या है? रेडियस दे रखा है हमारा रेडियस कांस्टेंट एंड उसका ओमेगा क्या दे रखा है? देखो इवन ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 रोटेशन पर मिनट, 5 रोटेशन पर मिनट एंड गिवन r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ऑब्वियसली एक सर्कुलर पाथ में रेडियस तो कॉन्स्टेंट ही होगा. सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड. यस, सो दैट मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेट न्यू टेंशन t dash equals to 2 times of original tension, that is t. The new speed is linearly dash, so nearly dash, new speed b dash is equal to dash. न्यू स्पीड वो कौन सा दे रखा है रे? रोटेशन पर मिनट. दैट मीन्स वो कौन सा स्पीड दे पूछा है एक्चुअली? ओमेगा के बारे में. ठीक ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कैसे सॉल्व होगा इसको? देखो, सो न्यू स्पीड ओमेगा डैश वही पूछा है, वो ओमेगा डैश के बारे में पूछा है. अच्छा, कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे? अच्छा, व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, व्हेन स्टोन इज टाइड विथ ए स्ट्रिंग एंड इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ट्रैक, दैट मीन्स इन दैट केस along the string tension is acting towards the center. Yes, so tension in the string provides necessary centripetal force. Yes, so tension provides necessary centripetal force which value is equal to mv square by r or mr omega square. mr omega square. So from this we can say mass of the stone constant, radius is also constant. There are given. So t is proportional to omega square. That means we can write t by t dash is equal to omega by ओमेगा डैश का होल स्क्वायर. यस, सो t डिवाइडेड बाई t डैश का वैल्यू 2t इज इक्वल्स टू ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 5 डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश उसका स्क्वायर. टी कैंसिल हो गया. देखो, सो इसमें क्या मिला हमको? 5 बाई ओमेगा डैश का स्क्वायर. दैट आंसर इज 1/2. दैट मीन्स 5 बाई ओमेगा डैश
इज इक्वल्स टू 1/√2. सो ओमेगा डैश का आंसर कितना हुआ? ओमेगा डैश इज इक्वल टू 5√2. 5√2 मीन्स 5 इंटू √2 का वैल्यू नियरली पुट करो 1.414, नियरली 1.4 पुट करो, दैट मीन्स 7, नियरली 7 रोटेशन पर मिनट. बस. So this is the value of new omega dash, that is 7 rpm. New omega dash will be 7 rotation per minute, 7 rotations per minute. Yes, so this is our correct answer for question number 7. So option number 1, this is your correct answer. Yes. Next come to question number 8. देखो, a particle is moving along a circular path. Okay, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. देखो, द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन लिखो. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दैट इज एससी. यस, एट एनी इंस्टेंट रेस्पेक्टिवली. अच्छा, वो गिवन दे रखा है ओमेगा वेक्टर, v वेक्टर, अल्फा वेक्टर, एससी वेक्टर. उसको लिखना कोई ज़रूरत नहीं है हमारा. देखो, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आर करेक्ट. यस यस, वो जब घूम रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में एट एनी इंस्टेंट, ये क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. वेरी गुड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. तो ये है हमारा लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी. अच्छा, और एक चीज़, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी वो ऐसे मूव कर रहा है सपोज एंटी क्लॉकवाइज मैनर पे. सो एक्सियल वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर. एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर मीन्स इफ इट इज एक्सियल वेक्टर, सो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यस, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. अच्छा, और एक चीज़ अल्फा, दैट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर. सो इसमें पता चल रहा है ए सी, दैट मीन्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी. फर्स्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द फर्स्ट ऑप्शन. ओमेगा वेक्टर एंड वी वेक्टर, इन दोनों के बीच में रिलेशन. ओमेगा क्या है इसमें देखो, तो जो ऐसे घूम रहा है ना, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड सेंस में होगा. पता चल रहा है तुमको? आउटवर्ड सेंस. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो वो, उसका एक्सिस क्या होगा? कर्ल राइट हैंड, राइट हैंड में जो एक्सेप्ट थंब, वो 4 फिंगर को हम लोग कर्ल करने के बाद वो थंब कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो. थंब रिप्रेजेंट्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन. तो ऐसे मैं डॉट सिंबल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. डॉट, डॉट मीन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन. सो इसको 2D में ऐसे ड्रा करने से ऐसे दिखाई देगा. देखो, ये है हमारा लीनियर वेलोसिटी शायद, एंड टुवर्ड्स this is your centripetal acceleration vector, and this will be our, bas, this will be our what? This will be our omega vector. Very good. Axial vector. Yes. So इसमें पता चल रहा है ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, नहीं बोलो? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर. ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट, ओमेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन. यस, ओमेगा वेक्टर perpendicular to v vector, this is correct. Then omega and alpha, ये दोनों नहीं, ये गलत होगा. ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, दिस इज नॉट ट्रू. यस, क्योंकि ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर एक्सियल. देन v वेक्टर परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लीनियर वेलोसिटी and centripetal acceleration both are perpendicular. Yes, and last option omega vector perpendicular to centripetal acceleration, that is also correct. From the figure it is, we are observing this one. That is omega vector perpendicular to centripetal acceleration. Yes, हो गया ठीक से. देखो, अरे हमको रिलेशन पता है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. नेक्स्ट, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. सो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, दैट मीन्स v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर, दैट इज ट्रू. डायग्राम के हिसाब से v वेक्टर परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड ओमेगा वेक्टर
omega vector perpendicular to centripetal acceleration. That is also true. So our option number A, C, D, these three are correct. So answer is our option number 4. I hope it is clear to all of you. Yes. Next we will solve question number 9. Come to question number 9. What is it? It is asking. Now see. Yes, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. Obviously, perpendicular to velocity of particle means that force is your centripetal force. Okay, ठीक है. As per the given question, force is of a constant magnitude. Force is always perpendicular to velocity of particle. इसका मीनिंग क्या है? We can write in mathematically. Given दे रखा है F vector is perpendicular to velocity vector. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its velocity is constant, kinetic energy constant, acceleration constant, moves in straight line. The force is perpendicular to velocity. What is the direction of this velocity? It is also along the direction of displacement. So we can say F vector is perpendicular to displacement vector. अच्छा, if F is perpendicular to displacement, their dot product का आंसर क्या होगा? Force dot displacement vector will be 0. If two vectors are perpendicular to each other, their dot product will be 0. फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू 0. एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0. के फाइनल का आंसर क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. क्लास 9 का कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम. वी विल डिस्कस इट इन वर्क एनर्जी पावर चैप्टर. So half mv square minus half mu square equal to 0 means half mv square is equals to half mu square. Yes, that means we can say v is equal to u. Question क्या था? Velocity is constant. नहीं, speed is constant. Speed, here v and u are representing speed. Velocity is constant नहीं. Kinetic energy is constant. That is true. K final equal to K initial. K final minus K initial is 0 means K final is equals to K initial. We can say. That means our option number 2 is correct. Kinetic energy is constant. That is true. I hope it is clear to all of you. So next come to question number 10. Yes. So in question number 10, it is mentioned if the equation of the displacement of particle moving on a circular path is given by theta. Achha, this is angular displacement is mentioned. Theta is equal to 2tq plus 0.5. That means half. Where theta is in radian and t is in second. Okay. Then the angular velocity of the particle after 2 seconds from its start is dash. From its starts after 2 seconds. जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, मोशन शुरू हो रहा है, उसको हम लोग क्या मेंशन करेंगे? t इज इक्वल टू 0. टाइम कभी 0 नहीं हो सकता है. टाइम 0 हम लोग मेंशन कर रहे मीन्स ऑब्जर्वेशन शुरू हो रहा है, मोशन स्टार्ट हो रहा है. लाइक दिस इन फिजिक्स वी आर कंसिडरिंग दिस वन. सो थीटा इज गिवन 2tq प्लस हाफ. दैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा पूछा है तुमको, ओमेगा एट 2 सेकेंड. इट इज आस्किंग ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी. यस, सो डी बाई डी टी ऑफ 2tq प्लस हाफ. सो 2tq का डेरिवेटिव क्या होगा? 60 स्क्वायर. हाफ का डेरिवेटिव 0. सो आंसर इज 60 स्क्वायर. सो दिस इज द ओमेगा वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एट t सेकेंड. सो इट इज आस्किंग दस ओमेगा at t is equals to 2 seconds. आंसर क्या होगा? 6 इंटू 2 स्क्वायर. दैट मीन्स 6 इंटू 4 दैट इज 24 रेडियन पर सेकेंड. 24 रेडियन पर सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर. यस. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11. यस. So in question number 11 it is given a sphere of mass small m is tied to end of string of length L and rotated through the other end along a horizontal circular path with speed v. The work done in full horizontal circle. अच्छा, when sphere is rotated in full horizontal circle, इसमें क्या हो रहा है? देखो एक एक फुल horizontal circle में वो घूम रहा है. देखो बस sphere of mass m. अच्छा, so इसमें क्या होगा? At every instant of time, tension in the string provides necessary centripetal force. बस. सो एक्चुअली पूछा है वर्क डन इन फुल हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या होगा? दैट मीन्स वर्क डन इन फुल हॉरिजॉन्टल सर्कल मीन्स वर्क डन बाय टेंशन फोर्स. दैट मीन्स वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स. बस उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैंग्वेज में थोड़ा.
सही तरीके से, व्हेन स्फीयर इज रोटेटेड, when sphere is rotated in full horizontal circle, tension provides necessary centripetal force. Yes, and is centripetal force a direction? It is perpendicular to direction of displacement. Yes, it is perpendicular to direction of displacement. That means work done क्या होगा, W is equal to F vector dot S vector. वो तो force perpendicular to displacement, so angle कितना होगा, Fs cos 90. That is your 0. So work done will be 0. So option 1 is your correct answer. This is about question number 11. Next come to question number 12. A body moves with constant angular velocity on a circle. Magnitude of angular acceleration. Constant angular velocity. So omega is given constant. Magnitude of angular acceleration. We know angular acceleration alpha is equals to d omega by dt. So omega is constant, so d by dt of, instead of omega we can write constant, and the derivative of any constant is 0. So our correct answer is 0. 12 का perfect answer क्या होगा, option number 3. Okay, next come to question number 13. Question number 13 देखो, a particle of mass m revolving in horizontal circle of radius capital R. अच्छा, this radius is mentioned capital R. Yes, with uniform speed v, when particle goes from one end to the other end of diameter. Suppose ये यहीं पर है, वन एंड से लेकर वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है अदर एंड, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, दैट इज कॉल्ड अदर एंड. देन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय हाफ mv स्क्वायर, then k changes by mv square, no change in momentum, change in momentum is 2 mv. अच्छा, तो देखो क्या करेंगे इसमें. सो व्हेन इट इज एट द लोअर एंड, उसका वेलोसिटी डायरेक्शन देखो, दिस इज द मास m, वेलोसिटी डायरेक्शन इज दिस वन, एंड सॉरी व्हेन इट इज एट द टॉप एंड, देन वेलोसिटी डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज v वेक्टर. सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इफ आई विल राइट इनिशियल मोमेंटम इज p initial vector is equal to mv I cap, and p final vector क्या होगा, mv minus I cap. तो चेंज इन मोमेंटम इसमें क्या होगा, p final vector minus p initial vector, that means mv minus I cap minus mv I cap. I cap कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस mv minus mv minus mv minus mv I cap. So final answer is minus 2mv I cap. This is your delta p vector, change in momentum. So उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा p वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होगा, 2mv ओनली, बस. सो आंसर इज 2mv. तो चेंज इन मोमेंटम इज 2mv. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर. चेंज इन मोमेंटम इज 2mv. Yes, I hope it is clear to all of you. Yes. Next come to question number 14. A stone is tied to one end of a string of 50 centimeter long. Okay, this is the position of stone and string. This string length is 50 centimeter, that is the 50 centimeter is r. Is wheel in a horizontal circle with constant speed. Yes, if the stone makes 10 revolutions in 20 seconds, then what is the magnitude of acceleration of the stone. Yes, v is equal to constant, it is given v is equal to constant. सही तरीके से क्वेश्चन को रीड करके उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने के बाद गिवन डाटा लिखोगे. सो ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज 10 रिवोल्यूशंस इन 20 सेकेंड्स. सो 10 रिवोल्यूशंस इन 20 सेकेंड्स. एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना, 2 पाई रेडियन. सो 10 रिवोल्यूशन पे 10 इंटू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 20 सेकेंड्स. आंसर क्या हो रहा है,
that is pi radian per second. Pi radian per second is our omega. What is the magnitude of acceleration of the stone? So आंसर क्या होगा? R तो दे रखा है हमको, R is equals to 50 centimeter. Yes, it is mentioned, it is 50 centimeter. And observe the options. Options are available in centimeter per second square. So no need to convert the radius 50 centimeter to meter. Convert नहीं करना है हमको. So डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें क्या एक्सेलरेशन. A is equal to direct value R omega square. R is mentioned, omega is given. बस. So R omega square means 50 into pi square. 50 into pi square means 50 into 3.14 उसका स्क्वायर. बस. द आंसर इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करोगे तो परफेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 3.14 का स्क्वायर 9.86 मिलेगा तुमको. यस. सो मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल गिव अस 492.98. सो नियरली इक्वल टू 493 रेडियन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी गलत हो गया. 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 1 is correct answer. I hope it is clear. Yes. So next come to question number 15. For a particle in non-uniform accelerated circular motion. Non-uniform accelerated circular motion. तो एक लेक्चर देखने से पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो थ्योरी का जो लेक्चर उसको अच्छे से कंप्लीट करो, तभी जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे अच्छे से. इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सीलरेशन इज टेंजेंशियल ओनली. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग कौन सा डायग्राम किए थे? देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हमारा किसी भी पॉइंट पे दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंड टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट. बस. तो नेट एक्सीलरेशन पाने के लिए हम लोग क्या करना है? दोनों को बेस करके एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे. सो डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कॉमन टेल पॉइंट गिव्स द नेट एक्सीलरेशन. यस. सो नेट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हुआ था हमारा? ए नेट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर देन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर होल रूट ओवर. बस. बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो वेक्टर एडिशन होगा. सो इसमें क्या पूछा है देखो. So in case of non-uniform accelerated circular motion, velocity is radial and acceleration is tangential only. No, centripetal भी center seeking acceleration भी available है. So this first option is wrong. Velocity is tangential and acceleration is radial only. ऐसा तो नहीं है. Velocity is tangential and acceleration is radial only. Velocity is radial. Acceleration has both radial and tangential component. Then velocity is tangential and acceleration has both radial and tangential components. देखो चारों ऑप्शन से कौन सा सही है? दिस फोर्थ वन इज करेक्ट. वेलोसिटी इज रेडियल, इट इज रॉन्ग. वेलोसिटी रेडियल तो नहीं है. यस, इसमें मिस्टेक है. वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एक्सीलरेशन इज रेडियल ओनली. ये जो ओनली लिखा है ना, इसमें गलत है एक्चुअली. वेलोसिटी इज रेडियल, फिर देखो रेडियल वेलोसिटी नहीं है. बस. एक्सीलरेशन इज टेंजेंशियल ओनली, इसमें भी गलत है. एक्सीलरेशन टेंजेंशियल भी है एंड रेडियल भी है. सो फाइनल परफेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 4. वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एक्सीलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट. आई होप all the questions that we have discussed in this lecture that is clear to all of you. So thank you and have a nice day. Kindly do like, share and subscribe this channel. Okay, have a nice day ahead.